very good morning to all. Hello everyone. ଟିକେ wait करिबा पिला ଟିକେ join हे जानतो हां. Then we'll start the class. So guys, as you have already know, हमारा batch launch होची जोटा कि प्रगति फाउंडेशन बैच 2, that is प्रगति फाउंडेशन बैच 2 launch होची already हे सारी लानी. आज होची लास्ट डेट. आपण माने मो कोड एसएसपी लाइव यूज करिकी परचेज कले आपण को डिस्काउंटेड प्राइस 9999 रे अवेल करि पारे. ठीक अछि. एल्स आगो को पुनी प्राइस रेज हेबार चांसेस बहुत ही अच्छी एंड हे ही जीवो. काली कुछ प्राइस अधिक हाई हे जीवो. तो बेटर जो माने भी इंटरेस्टेड अछंती, जो माने भी 2024 रे प्रिपरेशन करूचंती फॉर द ओसीएस, देन से माने प्लीज डू जॉइन. ओके, सो लेट न करिकी फर्स्ट स्टार्ट करिबा. देन मझे मझे स्टार्टिंग रो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू ऑल लाइक बाय सेइंग दिस एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल. सो स्टार्ट करिबा. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास कोन अछि? बहुत ही कम पिला जे क्लास रे अछि, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, so see, आमे 90 क्वेश्चन जाए ऑलमोस्ट कवर करि देइथिले प्रीवियस क्लास रे. आज जेमति को आपण मानु कहिथिली हमर एनसीईआरटी कवर अप करि करि जाउचे. सो फिजिक्स ही रहिबो आज. कोन होइची फर्स्ट क्वेश्चन आज रा देखंतु. वर्क डन इज 0. वर्क डन इज 0 when displacement is perpendicular to force. जेते बेले डिस्प्लेसमेंट हमें जहां भी जति के डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट. जेते बेले डिस्प्लेसमेंट ता परपेंडिकुलर हे जिवो कहा सहित ना फोर्स सहित, तेते बेले कोन हमें वर्क डन को 0 कहिबा की, या फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन जेते बेले कहबा ताको हमें कोन कहिबा की 0 बोली वर्क डन. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन कहिबा की. देखंतु जदी सेम डायरेक्शन में रहबो ताहले ताको हमें कोन कहूचे ना पॉजिटिव. पॉजिटिव फोर्स अप्लाई होची. जदी नेगेटिव होची कोन, जदी अपोजिट रहिला ताहले हमें कोन कहूचे ना नेगेटिव कहूचे. तो डिस्प्लेसमेंट जेते बेले परपेंडिकुलर कहा सहित हबो ना फोर्स सहित हबो, ताको हमें कोन कहिबा ना दिस इज 0 ऑफ फोर्स. वर्क डन इज 0. क्लियर? वर्क डन इज 0. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. light travels in, tell me, light travels in a curve path रे travel करे और a straight line path रे travel करे, या फिर zigzag path रे travel करे ना random direction किछि भी रे path करे हमर कोन light travel करे. तो light कोन curve display रे करे की, सपोज ए टाइप रे कोन लाइट ता पास करे की, या फिर स्ट्रेट लाइन रे हमें जदी एठी गोटे टॉर्च लाइट पकेले, एनी लाइट, ओके, नॉट अबाउट अ कोन नेचुरल लाइट हो आर्टिफिशियल लाइट हो, जे कोनसी लाइट हमें जदी एठी पकोउचे, देन तारो लाइट रो पाथ ता केमिति रहइबो, स्ट्रेट रहइबो और zigzag हे की आसीबो और किछि भी डायरेक्शन में आसीबो. सो ऑलवेज रिमेंबर लाइट travels in a straight line path. Light travels in a straight line path. Okay, so light travels in a straight line and hits the apple. Suppose for example तमन को कहूची एठी गोटे apple अछि and light straight line आसी की
पड़िला देन आम आखि के जो रेटा कन्वर्ट होगी देखा जीवो कौन होची ना द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द एप्पल एंड ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन टू द आई अलाउइंग इट टू सी द एप्पल दैट मींस लाइट ट्रैवल करूची स्ट्रेट लाइन में एंड रिफ्लेक्शन जोटा होची ता परे भी सेटा कहूची कोन ना स्ट्रेट लाइन रे हम आखि को देखा जाउची देयर इज नो कंफ्यूजन बिहाइंड दिस ओके नेक्स्ट देखो the speed of light in vacuum the speed of light in vacuum is approximately tell me approximately vacuum ro kete rahuchi speed sorry light ro speed vacuum re approximately kete rahuchi is that 3 into 10 to the power 3 meter per second is that 3 into 10 to the power 5 kilometer per second is that 3 into 10 to the power 6 meter per second or this is 3 into 10 to the power 2 kilometer per second tell me the right answer in the comment section what will be the right one the speed of light in vacuum is approximately what now this is 3 into 10 to the power 5 kilometer per second is that right guys is that right एते पिला अच्छा आंसर भी कही दो ना what's wrong with you today केही क्रॉस भी कले के आंसर दो ना कौन होची राइट आंसर कोटा हबो जदी एक्चुअली रे राइट आंसर जदी 3 into 10 to the power 8 थांता ताहाले कौन हे थांता ना राइट आंसर विल बी 3 into 10 to the power 8 meter per second ओके सो अप्रोक्सीमेटली ता पाखा पाखी जदी जीवो कोटा तमे आंसर करिवो दिस इज 3 into जदी एक्जेक्टली आंसर देइची देन इट्स ओके अदरवाइज तमे कहा को ना 3 into 10 to the power 6 meter per second को चूज करि परिबो ओके नेक्स्ट देखो तो मटेरियल कौन कौन रहूची सपोज एयर मीडियम रे वाटर मीडियम रे परस्पेक्स रे और ग्लास रे डायमंड रे हमर को टाइप रो केते केते टार रहूची ट्रैवल करूची मीटर पर सेकंड रे हमर लाइट रो ट्रैवल डिस्टेंस केते स्पीड रे जाउची दिस इज द टेबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a shadow is formed when tell me a shadow is formed when light bends around an object जेते बेले लाइट टा ऑब्जेक्ट रो पाखरे बेंड हे की रहिबो सेते बेले शैडो फॉर्म होबो और ए लाइट पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट जेते बेले लाइट टा सपोज गोटे ट्रांसपेरेंट हो ट्रांसलूसेंट हो ऑब्जेक्ट अछि लाइट टा जेते बेले ताकू देकी क्रॉस करी गला ताहाले कोन गोटे शैडो फॉर्म होबो की इज दैट पॉसिबल जदि गोटे अपाक ऑब्जेक्ट रहिला एंड लाइट को से कोन ना स्टक करी की रखिला एपटू को क्रॉस करिवा को देलानी देन जाई के ऑपोजिट रे हमर तार शैडोटा फॉर्म होबो यस और नो जदि लाइटटा ताकू रोकी परिला ओनली इन केस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट सो ऑप्शन कोन अछि लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्जेक्ट ऑड वन आउट लाइट passes through an object no light is completely blocked by an opaque object then हमर कोन होबो ना शैडोटा फॉर्म होबो is that clear guys next देखो so here is an example of what ना जेते बेले शैडो फॉर्म हुए को टाइम रे को सनलाइट पडुचे जेते बेले 12 o'clock रे एक्जेक्टली हमर कोन सन हेड रो ऊपर ही रहंती तो सेई टाइम रे केमिति शैडो फॉर्म हुए so this is the picture of that so next को the size of a shadow depends on हमर शैडो रो साइज ऑलवेज डिपेंड करे कहा ऊपर देखंतु the distance of the object from the light source or the shape of the object only or the color of the object or the weight of the object weight and color सहित किछि रिलेशन यार ना so option कोन रहउची त दीटा the distance of the object from the light source or the shape of the object only shadow depend करिवो कहा सहित ना shape सहित depend करिवो को टाइप रो
शैडो पड़िबो बट शैडो पड़िबाटा निहाती दरकार शेप सहित किछि मतलब नाही शैडोटा गोटे लाइट पड़ला आउ जदि से ऑब्जेक्ट हमर ओपाक हेथिबो ताले नो डाउट शैडो फॉर्म हबो बट को टाइप रो ऑब्जेक्ट रहिबो सेटा डिपेंड करे शेप ऊपर सेटा अलग टॉपिक बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड the size of the shadow depends कहा ऊपर करूची ना the distance of object जेते बेले सपोज गोटे लाइट पडुची एंड केते डिस्टेंस रे ऑब्जेक्ट ता अछि जदि दूर रु पडिबो ऑब्जेक्ट ता छोटो देखा जिवो शैडो ता छोटो फॉर्म हबो जदि पाखरु आसीबो ताले शैडो ता बड़ फॉर्म हबो सो एटा कहा ऊपर डिपेंड करूची ना हमर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइट सोर्स ओके द डिस्टेंस ऑफ द object so the size of the shadow depends on the size of the object the distance from the light कहाँ का ऊपर कहूँ देखा size of the object the distance from the light to the object and the distance from the light to the screen so a bright point of light suppose this is a कौन point जो थी हमरा light टा को pass करूचे and एठी अछि screen टा तो त्या ऊपर जो पछपटे जो शैडो टा फॉर्म हम कहाँ ऊपर डिपेंड करूची ना केतिके डिस्टेंस रे हम लाइट टा को पकोउचे ता ऊपर ही कौन डिपेंड करूची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following is an example of a luminous object tell me which of the following is an example of a luminous object luminous means कौन जोटा कि निजे जळु थिबो जे कोनोसी जळि थिबा पदार्थ हेला वस्तु हेला हमें ताकू कोन कहि परिबा दिस इज luminous object but here are the options कोटा हबो देखंतु मून रहिला तेरे कोन निजे जळुची ओके हमें ताकू जळेबा को पडुनी कैंडल हेला वुडन टेबल हेला ग्लास हेला तो मून ता कोन बर्निंग होउची कि कैंडल ऑड वन आउट कले कोन वुडन टेबल ता नाही ग्लास ता नाही मून रहिला कैंडल रहिला मून इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ताकू हमें कहि परिबानी दिस इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कहि परिबा ना कैंडल को कहि परिबा जहा को हमें लुमिनस करि भी परिबा एंड ताकू लिभेई भी परिबा ओके नेक्स्ट so the darkest part of a shadow is called the darkest part of a shadow is called कौन हबो लाइक शैडो रो कोन तीटा साइड थाए गोटे होची पूरा डार्केस्ट पार्ट आ गोटे होची कोन ना डार्क रो ऊपर को टिके लाइट डार्केस्ट थाए तो डार्केस्ट पार्ट को हमर कोन कहसे इज दैट उम्ब्रा इज दैट पेनुम्ब्रा इज दैट फोकस इज दैट रिफ्लेक्शन त नुह फोकस त नुह सो उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा भितरु मते गोटे को what will be the right answer गोटे कहिलो so darkest part ता कोन हबो ना हमर उम्ब्रा हबो whereas टिके लाइट darkest part रहिबो शैडो रो सेटा को हम कोन कहउचे ना पेनुम्ब्रा कहउचे ओके so right answer will be what ना this is उम्ब्रा मने रहिबो शैडो रो darkest part ता को कोन कहवा जाउची ना उम्ब्रा बोली कहवा जाउची so shadow केमती फॉर्म होउची ना the evenly dark part of a shadow is called what na umbra means shade in latin the fuzzy part of between the dark and the light is called what na penumbra जोटा कि कहितली टिके not more the darker but टिके light and darker mix हेगी थिबो then सेटा को हम कोन कहि परिबा this is penumbra so pene means what na almost in latin word so almost dark जोटा अछि almost shaded अछि ताको हम कोन कहि परिबा ना shadow but this is not completely the exact definition of what shadow okay guys next which of the following materials is transparent tell me which of the following material is transparent ट्रांसपेरेंट माने गाइस कोन जोठू लाइट टा क्रॉस करिकि ऑपोजिट को जाई परथुबो दिस इज नॉट एन ओपैक जोटा ओपैक हेई नथिबो और लाइट टा पड़ी के हमर क्रॉस करिकि ऑपोजिट को जाई परथुबो ताको हम कोन कहि परिबा दिस इज ट्रांसपेरेंट सो कोटा हबो कोन वुड रे जते बेले हमर लाइट पडुची सेटा क्रॉस करिकि जाई परिबो कि हमर फ्रॉस्टेड ग्लास हैला एयर हैला एंड कार्डबोर्ड हैला
फ्रस्टेड मीन्स आपण देखिथिबे जोटा टिके फॉगी फॉगी हेकी थिबो इवन कोन लाइट क्रॉस करि पारिबनी बस एमिति देखा जिवो कि लाइट एंड बट लाइट क्रॉस करिकि जाय ओके तो कौन हबो ना हमर राइट आंसर विल बी व्हाट ट्रांसपेरेंट रे एयर को नै परिबा कार्डबोर्ड तो हबनी कोटा हबो ना एयर मीडियम रे लाइट टा को इजीली हमें कोन एपट सेपट करि परिबा से कोनोसी भी जगह को विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी ब्रेकडाउन से पहुंची पारि नेक्स्ट देखो सो ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपाक भितर किछि टाइनी डिफरेंस अछि जोडा कि जानि दियो कोन अछि ना ट्रांसपेरेंट इज अलाउज ऑल और मोस्ट लाइट टू ट्रैवल थ्रू it is possible to see clearly through transparent materials and what is translucent that allows some light to pass through it is not possible to see through translucent materials okay translucent रे आपण कोन पेपर को नै परिबे so this is an example of what this is an example of translucent तो ओपाक कोन जे टोटल लाइट को ट्रैवल करिया को दिएनी क्रॉस करिया को दिएनी एकदम ब्लॉक करके रखे सो वुड हैला या फिर किछि भी जिंस हैला स्क्रीन हैला जोटा कि कोन एकदम सनब्लॉक स्क्रीन हैला ए सब रे कोन होउची ना लाइट ट्रैवल करि पारिबो ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mirror changes the direction of light by a mirror changes the direction of light by absorption method रे या फिर रिफ्रैक्शन मेथड रे या फिर रिफ्लेक्शन मेथड रे या फिर ट्रांसमिशन मेथड कौन हबो मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय व्हिच मेथड ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन मेथड रे जते बेले गोटे मिरर ऊपर सपोज दिस इज अ व्हाट दिस इज अ मिरर एंड एठो हमें कोन पकेइले ना लाइट को पकेइले ओके लाइट को हमें पकोचे सो जते टच करूची अगेन से रिफ्लेक्ट करी जाउनी कि अदर डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करी जाउची टी अदर डायरेक्शन को ताहले हमें कोन कहि परिबा ना मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ओनली रिफ्लेक्शन ओके जदि एब्जॉर्प्शन हेइ थांता कोन ना से तो ऑलरेडी हमर कोन लाइट को एब्जॉर्ब कर दै थांता देन रिफ्लेक्ट केते बेले हेइ थांता ओके सो मिरर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब द लाइट so here what I have already just clarify you all this is the law of reflection states that what does the law of reflection kon kuhi the angle of incidence is greater than the angle of reflection is the angle of incident माने कोटा ना लाइट रो जोटा हमर मिरर को पडुची या फिर जो ऑब्जेक्ट अछि तापर रिफ्लेक्ट हबो सेटा जेले पडुची जो लाइट रो टच करूची सरफेस को सेही एंगल टा कोन रिफ्लेक्शन एंगल टू बड़ हेथिबो कि or the angle of reflection is greater than the angle of incidence so angle of incidence to angle of reflection बड़ हेथिबो कि or the angle of incidence is equal to the angle of reflection कोटा हबो is equal habo or the sum of the angles is always 90 degree tell me what will be right answer mate diyo comment section re what will be the right answer I need it in the comment section please give me there the law of reflection states that what law of reflection kon kahuchi ओडिशा बहुत जल्दी क्लास को आसी गलो आंसर देलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कहूची ना एंगल ऑफ इंसिडेंस हमर जते बेले प्लेन सरफेस रे पडुची फॉर एग्जांपल देख तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेति की पडुची रिफ्लेक्ट भी सेति की एंगल रे होउची सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन angle of incidence is equal to always angle of what reflection sorry this one okay
So कोटा हबा right answer ना the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This is the law of reflection states that. Okay, next देखो. So the angle of incidence equal to the angle of reflection. The incident ray, the reflected ray, and the normal are all in same plane. Next question answer there. The image formed by a plane mirror is. The image formed by a plane mirror is what? गोटे इमेज जते बेले प्लेन मिरर रे फॉर्म होची सेटा को हमें कोन कहि परिबा इज दैट गाइस इन्वर्टेड इज दैट वर्चुअल एंड ऑफराइट इज दैट मैग्निफाइड और दैट इज रियल प्लेन मिरर रे भाबुथु आपण माने कि प्लेन होची माने त कोन ऑब्वियसली रियल इमेज ही हमें देखुचे हमें जो इमेज यूज करूचे डे टू डे लाइफ रे मिरर रे हमें फेस देखुचे सेटा कोन होची सेटा प्लेन मिरर सो आपण माने भाबुथु हमें त हम रियल फेस ही देखि पारुचे ऑब्वियसली कोन हबो राइट आंसर रियल हबो ना गाइस प्लेन मिरर रे कोन हबो ऑलवेज जो इमेज फॉर्म हुए सेटा हुए वर्चुअल एंड ऑफराइट ओके so this is the logic behind the real amara plane mirror re kemti virtual image form हुए look person looking at the image in a plane mirror suppose this is the mirror okay so light appears to coming along this straight line from the tip of the head so tip to head पर्यंत हमरा कोन हैला ना लाइट फॉर्म हैला दैट्स व्हाई कोन हैला ना वर्चुअल इमेज हमको अपोजिट रे प्लेन मिरर रे सबले लेफ्ट आ राइट आ लेफ्ट हमको देखा जाय ना नहीं so जते बेले आपण जानिथुवे कि रियल इमेज आसुची सेटा केते बेले रियल आसेनी प्लेन मिरर रे सब बेले वर्चुअल आसे बिकॉज़ लेफ्ट आ राइट आ लेफ्ट साइड हमको देखा जाय ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो tell me shadows are always colored black transparent or invisible shadow टा आपण मानकु केमिति देखा जाय मते तो ब्लैक देखा जाय आई डोंट नो आपण मानकु केमिति देखा जाय बिकॉज़ नोबडी इज आंसरिंग देयर सो कोन हबो ना ब्लैक ही नेक्स्ट क्वेश्चन tell me a pinhole camera works on the principle of गोटे pinhole camera work करूची को principle what is pinhole camera जानि चंती इमेज रे देखौची so this is what na pinhole camera okay so ता भीतर कोन थाए ना बॉक्स थाए गोटे स्क्रीन गोटे पड़ी थाए एंड गोटे होल टे थाए ओके से होल रो कोन हुए ना स्क्रीन रो हमर होल थ्रो रे लाइट पड़े दैट्स व्हाई हमर कोन हुए ना ऑब्जेक्ट ता देखा जाय भीतर ओके तो मते कुह ए जो टोटल टा रहूची तो ये कैमरा रो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऊपर हेची इज दैट ऑप्शन कोन अछि देखंतु reflection refraction rectilinear propagation of light or dispersion this is due to what due to the rectilinear propagation of light okay due to what due to the rectilinear propagation of light the pinhole camera ro eta hochi principle mane rahiba not reflection not refraction not dispersion next question answer diyo which of the following is an example of an opaque object एबे तुमको ही कहितली ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपाक ऑब्जेक्ट भितरे कोन डिफरेंस रहउछ नाउ टेल मी which of the following is an example of an opaque object को is that glass ता कोन हमर ट्रांसपेरेंट रे जाउची वाटर ता कोथरे जीवो ट्रांसलूसेंट रे जीवो बुक टा कोथरे जीवो ना ओपाक रे जीवो प्लास्टिक शीट ता भी हमर कोथरे ओपाक रे जीवो बट प्लास्टिक डिपेंड करे कि को टाइप रो प्लास्टिक जदी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी थाई पारे एंड नॉन ट्रांसपेरेंट भी रहउची सो दिस इज प्लास्टिक ता हमर कोथरे ना ट्रांसलूसेंट अंडर रे मोस्टली जीवो बट ओपाक रे कोन ना बुक इज ए ओपाक ऑब्जेक्ट next question answer diyo which phenomenon causes us to see our reflection in a mirror कोथि पई आमे मिरर रे रिफ्लेक्शन हुए आ जोटा आमे देखे रिफ्रैक्शन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन डिस्पर्शन और एब्जॉर्प्शन
Tell me, which phenomenon causes us to see our reflection in a mirror? Tell me the right answer. कहीं भी comment रे मते answer दो ना. एटा इत्ते difficult class ता तम मानकु लागुची. हम्म. कोथि पे होची? Now this is because of what? Specular reflection. This is because of specular reflection. आमे जे कोनसी ऑब्जेक्ट को आमे कोथरे ना मिरर रे देखि पारुचे. ओके. नेक्स्ट देखो. सो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कौन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन जिते बेले गोटे प्लेन सरफेस प्लेन मिरर हेइथिबो या फिर जो सरफेस ता पडुची ऑब्जेक्ट तार पडुची एंड रिफ्लेक्ट होउची सेता जे प्लेन थिबो सेटा त हमर कोन हबो ना स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हबो जदि सेटा एमिति पर कोन आबडा खाबडा हेकि थिबो नॉट क्लियर नथिबो तो ताको हम कोन कहि परिबा ना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एमिति हेले कोन हबो ना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ व्हाट रिफ्लेक्शन हबो सो एटा कोथरे हबो ना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रे आगु को या ऊपर भी क्वेश्चन अछि देखो द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड कौन हबो ना स्पेकुलर रिफ्लेक्शन गाइस इज अदरवाइज नोन एज व्हाट ना रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज अदरवाइज नोन एज व्हाट ना इरेगुलर रिफ्लेक्शन ओके सो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन irregular reflection are same so now tell me कि smooth surface रे जते बेले reflection हुए ताको हमें कौन कहूचे ना ताको हमें मैम कहूचे कि regular reflection ताको हमें कौन कहूचे ना regular reflection ठीक तो regular reflection में कौन हुए ना angle of incidence and angle of reflection कौन हबो ना हमर same हबो suppose this is a okay हमें ताको line of करि देइचे तो ये भितर हमर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हबो बट जेते बेले इरेगुलर रिफ्लेक्शन और हमें ताको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहूचे सेते बेले हमर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन केबे सेम हबोनी ओके बिकॉज़ सरफेस ता ही हमर कोन स्मूथ नथिबो आबडा खाबडा हेकि थिबो नेक्स्ट देखो what type of mirror is used in vehicles to see a wider area so vehicles रे हमर को टाइप रो मिरर यूज करा जाय टू सी व्हाट to see a wider area tell me is that plane mirror vehicles रे यूज हुए और convex mirror यूज हुए और concave mirror यूज हुए और cylindrical mirror यूज हुए कुहा कौन हुए ना convex lens यूज हुए what ना हमारा convex mirror यूज हुए convex mirror और convex lens whatever you can say हमारा convex यूज हुए कोथिरे ना हमारा कार रो साइड दीटा रे यूज हुए एंड जो बैक साइड रे गाड़ी भीतर आपण माने देखुथबे पछकु देखिया पय भी गोटे मिरर यूज हुए सेटा पे हमर कोन ना convex mirror यूज हुए ओके लेट्स सी नेक्स्ट now tell me in which type of reflection in which type of reflection is the mirror sorry is the image not formed clearly in which type of reflection is image ta clearly format हुए कोटा हबो regular reflection diffuse reflection total reflection or complete reflection मु तुम मानु कहिथिली regular and diffuse are two opposite one regular जोटा diffuse टा opposite diffuse जोटा कोन irregular सेटा तो जदि गोटे प्लेन सरफेस रे पडिबनी लाइट टा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल डिफरेंट हबो ताहाले इमेज टा केते बेले गोटे पर्टिकुलर इमेज हमरो बाहरिबो इमेज टा ऑलवेज कोन हबो हमरो डिफरेंट आसीबो रादर देन द कोन इंसिडेंट एंगल जति के बनिथिबो सो इंसिडेंट सहित जते रिफ्लेक्शन एंगल सेम हबोनी तो जो इमेज टा फॉर्म हबो सेटा भी हमरो सेम ओके so kon habo na in which type of reflection the image
not formed clearly, this is diffuse reflection, or we can say this is irregular reflection. Next. Okay. रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेकुलर बोली भी कहंती, ताकू प्लीज माइंड रे टिके रखिथा. ओके, अदरवाइज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन पके दबा एग्जाम रे एंड तुम माने ऊपर को नहीं बसते. चलो नेक्स्ट. ओके, सो गाइस हमर प्रथम बैच OSSC CGL रो आपण लॉन्च होउची, ऑलरेडी हेई सारिलानी, नॉट होउची. तो आज होउची लास्ट डेट. जो माने भी मो कोड SSP लाइव यूज करी की परचेज करिवे से माने डिस्काउंटेड प्राइस 1799 रे पाई जिवे, जोटा कि सबुठु लिस्ट अमाउंट. एक्चुअल अमाउंट अछि 2250. आपण माने जदी मो कोड यूज करछोंती ताहाले 1800 रे ताकू पाई पाइबे. ओके, कौथि पई ना हमर प्रथम बैच फॉर OSSC CGL पई. एंड प्रारंभ बैच हमर OPSC ASO पई भी लॉन्च हे सारी छी. टॉप एजुकेटर्स माने बढ़िया बढ़िया आपण माने क्लास दोउचंती. ऑलरेडी पिला जॉइन हेगी क्लास स्टार्ट हेलानी. जो माने भी इंटरेस्टेड अछंती से माने जॉइन करि पारबे. एक्जेक्टली मो कोड होचे SSP लाइव यूज करी की, एंड सेटा भी डिस्काउंटेड प्राइस केते अछि ना 1800 टका अछि. अदरवाइज आपण माने को 2250 पड़िबो. ओके, एंड आज ही होची लास्ट एंड डेट. जदि नेबा को जो माने इंटरेस्टेड अछंती से माने प्लीज आज ही एनरोल करंतु. अदरवाइज परे नेबे तो आउ 100 200 100 टंका भी हेले एक्स्ट्रा कोठु आसीबा. 100 200 काई अधिक पकेबे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. टेल मी द मून appears bright at night. The moon appears bright at night because राति रे हमर मून टा ब्राइट काहे की देखा जाए. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? बिकॉज की कोनथि पई कोन से एमिट करूची ओन लाइट को, कोन रिफ्लेक्ट करूची से सनलाइट को, और एब्जॉर्ब करूची स्ट्रेट लाइट को, और ग्लो करूची इन द डार्क रे. मून टा ग्लो करूची सेति पे हमको देखा जाउची. व्हाट विल बी द राइट आंसर? आमे समस्त छोट बेलु जानि छे कोन हमर जन्म मामुकर निजर किछि सोर्स ऑफ लाइट न थाए. से कहार लाइट रे ना सूर्य का लाइट रे ही तो लाइटन हुवंती. तो ऑब्वियसली कोन होथबो ना इट रिफ्लेक्ट sunlight. This is nothing but the reflection. Because आमे अच्छे सपोज इंडिया रे अच्छे पृथ्वी रे गोटे साइड रे, तो आम पटे जते बेले सूर्य अस्त हो जाउचंती, ऑपोजिट साइड रे तो उदय होउथिबे ना. जते बेले आमठी उदित होउचंती सूर्य, तो मून रो ऑपोजिट माने सूर्य पृथ्वी रे आ गोटे साइड रे सूर्य अस्त होउथिबे, तो मून रहउचंती मझी रे. आपण माने समझ जानचंती इमेज केमिति रहउची. सपोज दिस इज द सन and this is suppose moon and एटा रहिला अर्थ. जदि उल्टा हे जिवो कोन हबो ना अर्थ ता एमिति गुली के आसी एठी पळे आसीबो, एठी सन आसीबो. सो डिफरेंट लाइन रे हमर कोन पडिबो ना सन रो रिफ्लेक्शन के करिवो ना मून हमर रिफ्लेक्ट करी के लाइट को देखि. ओके, सो नेक्स्ट चलो. सो एक्जेक्टली व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इज दैट. ओके, चलो नेक्स्ट. when light falls on a rough sorry yes when light falls on a rough surface sheet, जते बेले रफ सरफेस ऊपर पड़े मु कहितली कोन ना इरेगुलर हबो. रेगुलर हबनी. इरेगुलर को आ गोटे वर्ड कोन कहितली. जो माने भी भलो से क्लास करूछ मने अछि ताले मते आंसर दियो. कोन अछि ना when light falls on a rough surface कोन हबो, इट एब्जॉर्ब कंप्लीटली हबो, और undergoes diffuse reflection, or bends हबो, or light travels in a straight line. हम समझते जानि छे, but this is not. So कोन हबो now when light falls on a what rough surface, it undergoes what diffused reflection. Undergoes what? Undergoes diffused reflection. Next देखो. So irregular reflection हमर कोन हुए ना, it occurs when a beam of light falls on a rough surface, not a plane surface. Incident rays are parallel, but reflected rays are not parallel. So incident rays is not equal to reflected rays. That means it a irregular reflection haba. That means it a irregular reflection haba. Okay. Next देखो.
आंसर दियो हेलो हाई करी कौन पाइबो रे आंसर दियो ए पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेल मी ए पेरिस्कोप works on the principle of what? Is that refraction? Is that dispersion? Is that multiple reflection or it is absorption? कौन हबो ना पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ what? को प्रिंसिपल अकॉर्डिंग हमरो पेरिस्कोप कोन काम करे रिफ्लेक्शन पाई डिस्पर्शन पाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन पाई और एब्जॉर्प्शन पाई पेरिस्कोप देखिछो को माने केरी हेथिबारो yes this is because of what na multiple reflection this is because of what multiple reflection yes so here is the image and केमिति हुए suppose एठी गोटे मिरर लगा जाई थाए and again एठी गोटे मिरर भी थाए मिरर न थाए but गोटे opaque object थाए जोटु कोन हुए ना मिरर ही थाए so that light टा जते बेला पे एठु पकोचे then एठु से रिफ्लेक्ट करिवो again एठी की then एठु से again रिफ्लेक्ट करिवो एठी आपण कहबे कि हमर रिफ्लेक्ट अलगा को डायरेक्शन में करि कोन पे करि पर बिकॉज़ लाइट ता हमर कोन स्ट्रेट लाइन ही पास करे आपण माने जानि चंती एंड द मेन पॉइंट होची कोन एठी जे कोनसी मिरर आपण लगेई थिबे सेटा 45 डिग्री एंगल रे लगा अछि okay that's why this is the mechanism behind the making of periscope that's why हमर लाइट ता क्रॉस करी की opposite direction को जाई परछ okay guys yes so a periscope works on the principle the laws of reflection the light from the object falls on one mirror जोटा कि placed at 45 degree to the object and is reflected this reflected light in turns falls on the another mirror and is again reflected until it reaches the human eye here is the human eye okay guys clear next question for you क्लास रो अध घंटे पर तम मानकर इच्छा होची आंसर देया पे ना रे what happens when light falls on a black surface जदि ब्लैक सरफेस उपरे हमर लाइट पड़िबो ताहाले कोन होबो लाइट ता एब्जॉर्ब करि जिवो और रिफ्लेक्ट करिवो और ट्रांसमिट करिवो और ब्लैक सरफेस ता व्हाइट हे जिवो कुह मते हमकु खरा दिने सब बेले घरे मना करंदी खरा दिने जते व्हाइट पिंदी की बाहर को जाउचो जाओ ब्लैक पिंधनी केते बेले डार्क कलर पिंधनी why what is the reason behind that guys tell me yes because what because it is absorbed completely dark color hela या फिर exactly black color कथा हला जते बेले लाइट ता पड़े ता ऊपर से कोन हुए ना टोटल एब्जॉर्ब कर दे जति पे हमर हीट ता अधिक पड़ी जाए दैट्स व्हाई हम कोन कहंती ना सब बेले खरा दिने लाइट ड्रेस या फिर कोन व्हाइट ड्रेस ही यूज करिबार अछि वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which type of mirror which type of mirror always forms a virtual erect and diminished image which type of mirror always forms a virtual erect and diminished image is that plane mirror is that concave mirror is that convex mirror or parabolic mirror कोटा हबो जोटा कि always कोन ना virtual erect and diminished image हमको फॉर्म करे tell me yes so what will be the right answer this is convex mirror this is what na convex mirror अच्छा चलो no this is convex mirror next चलो convex and concave भितरे कौन difference रहउची guys तमाने भी मते कंफ्यूज करूछ कौन अछि रे virtual erect and diminished भितरे कौन रहिबो को टाइप रो virtual जदी रहिला हमर प्लेन रहिबो कौन virtual and upright okay concave रे virtual and diminished रहिबो but convex रे virtual and parabolic
Yes guys, virtual, erect and diminished वाला जदि रहिबो तीनटा जाक सेमली रहिबो then that will be what ना parabolic. Okay, sorry for the inconvenience. कौन हबो ना parabolic. तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर भितर कौन डिफरेंस रहउची ना कन्वेक्स ऑब्जेक्ट्स फंक्शन आर व्हाट आर दोस द कर्व्ड आउटवर्ड जते बेले कर्व हेकी रहउची तते बेले ऑब्जेक्ट पडुची सेटा कोन देखा जाउची ना टिके एम्ति शेप चेंज हेकी देखा जिवो ऑब्वियसली ए टाइप रो इमेज केमति फॉर्म होउची एंड जते बेले कनकेव कोन करूची कर्व टा केमति एपट साइड को थाए बट कर्व टा जदी अपोजिट डायरेक्शन को रहिबो तते बेले हम कोन ना कनकेव इमेज हमरो फॉर्म हबो बोली मन रखिबो. ओके okay next चलो. so a shadow is formed when shadow केते बेले form हुए guys option देखो when a shadow is being formed when light is absorbed when light is blocked when light is refracted or light passes through an object. कौन हबो यार आंसर मते दियो. शैडो केते बेले फॉर्म हुए जेते बेले लाइट टा जदी एब्जॉर्ब करि जिवो ताहाले कोन शैडो टा फॉर्म होबे कि लाइट टा जदी टोटल एब्जॉर्ब करि जिवो देन हमर कम हबनी लाइट टा जदी टोटल एब्जॉर्ब करि जिवो ताहाले शैडो फॉर्म हबनी बट लाइट टा जदी ब्लॉक हैला ओके लाइट टा जदी ब्लॉक हैला एंड उठे देला परे पुनी पडिबो ए टाइप रो हैला लाइट टा ब्लॉक हेले अदर रे कोन हबो ना हमर शैडो फॉर्म हबो. Yes, if the light is blocked by any opaque object, then the shadow formed. Okay, guys. Next, देखो. And umbra and umbra and penumbra मन रखिथिबो. Never get confused about what is umbra and what is penumbra. Next here, the image formed by a pinhole camera is. कहिथिली पिनहोल कैमरा केमिति रहउची तो पिनहोल कैमरा रे जो इमेज टा हमर फॉर्म होउची is always what is always erect and enlarged is always inverted and real is always virtual and magnified or it is smaller and erect. tell me pinhole camera रे हमर जो इमेज फॉर्म होउची सेटा केमिति होउची. tell me the right answer. संदीप पढ़ा संगे पूरा टच रे अछ ना कि so the image formed by what na by pinhole camera is always what na virtual sorry inverted देखो तो लिखे दोची गोटे मिनिट राइट आंसर दे दियो. pinhole camera रे केमिति हबो ना inverted and real हबो. look how this is the mechanism of pinhole camera जदी गोटे पिन सपोज गोटे बॉक्स भीतर हम गोटे होल्ड करूचे एंड भीतर गोटे स्क्रीन लगाउचे ताहाले इमेज टा जते बड़ हो नो मैटर केते बड़ हबो केते छोटो हबो एग्जैक्ट इमेज टा हमरो स्क्रीन ऊपर देखा छी. ओके गोटे स्क्रीन रो साइज जति की थिबो ता अकॉर्डिंग हमकु देखा जिवो टोटल इमेज टा फ्रॉम द टिप टू टो जति की इमेज रो साइज रहिबो टोटल टा हमर एथे देखा जिवो. सो इट इज कोन ना इन्वर्टेड and what inverted and real. Clear guys, this is inverted and real. vertical and magnified. चलो what happens to a shadow when the light source is moved closer to the object. what happens to a shadow when the light source is moved closer to the object. कौन हबो. tell me the right answer. it becomes larger, it becomes smaller, it disappears or it changes the color. कौन हबो. what happens to a shadow when the light source is moved closer to the object. tell me right answer. तो कौन हबो ना जते बेले गोटे शैडो फॉर्म होउची लाइट सोर्स रु कौन होउची ना becomes larger हबो ऑब्जेक्ट रो शैडो. when
जेतेबेले गोटे लाइट सोर्स इज मूव्ड क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट द शैडोटा बिकेम लार्जर हबो यदि दूर को जीवो शैडो बिकेम स्मॉलर ओके दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल next question दियो the phenomenon responsible for the twinkling of stars is so जो star twinkling हुए ता पछरे को law अछि कोन लॉजिक अछि मते कुह is that reflection refraction scattering or diffraction tell me tell me the phenomenon of responsible for twinkling of stars is this is because of what because of refraction because of what because of refraction look how so जेतेबेले आमे देखुचे लाइट को सपोज स्टार को आमे देखुचे तो गोटे केमिति आसुची ना रिफ्रैक्शन हे के आसुची बिकॉज़ हमरो एयर रे कोन बहुत सारा पार्टिकल्स अछंती जोतरे कि से कोन बाजी की रिफ्लेक्ट करि परछि बाजी की रिफ्लेक्ट करिवो गोटे मिनिट दिनो लाइट गोटे पास करूछु आंसर दियार गोटे मोर भी लाइट पास करी के रिफ्लेक्शन चलिलानी yeah I think this is right okay now tell me what will be yes this is because of refraction because of what na atmospheric refraction next chalo a concave mirror can form concave mirror ketebele form हुए only virtual image like concave mirror can form only virtual image only real and virtual or no image at all or no image at all tell me a concave mirror can form what only virtual image only real image both real and virtual or no image at all what will be the right answer this is what na both real and virtual image kiye karibo na concave mirror form karibo see so reflection of light in a concave mirror केमिति रहउची सपोज कहितली concave mirror रहइबो केमिति ए टाइप रो कर्व बट convex केमिति रहइबो ए टाइप रो रहइबो ओके एठु लाइट पड़िबो नेक्स्ट देखो which of the following is a non luminous object luminous object already तुमको कहितली what is luminous so just opposite रहिला non luminous so sun is a luminous object candle is a luminous object star is a luminous object but mirror is not a luminous object next देखो so non luminous object is what a non luminous object do not create light so moon को गोटे perfect example नहीं परिबो non luminous object so how are we able to see them then we can see non luminous object because of the light reflected of them जेतेबेले लाइट रिफ्लेक्टेड है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ऊपर पड़े देन हमें ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखि जाय ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द ऑप्शंस आर एम्पियर कूलम्ब ओम और वोल्ट एम्पियर कूलम्ब tell me ampere coulomb ohm or volt यार तो आंसर एटलीस्ट दियो
कौन हबो ना SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज रो कौन हबो ना कूलम हबो बट जदी पचारि थांता कोन ना SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ताहले कोन करथांता जदी चार्ज बदल रे एठी कोन थांता ना करंट थांता ताहले राइट आंसर कोन ही थांता ना एम्पियर ताहले कोन ही थांता राइट आंसर ना एम्पियर ही थांता ओके एंड ओम टा कोथि पई ओम इज फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जदी चार्ज थांता चार्ज अछि कूलम अछि करंट अछि एम्पियर हबो बट जदी या बदल रे रेजिस्टेंस थांदा ताहले हमें कोन करथांते ना ओम इज फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओके सो नेक्स्ट वोल्ट कोन होची ना वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ व्हाट ना पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट फॉर द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मन रहिबो next so units of electric charge the symbol for the electric charge usually q रे symbolize करा जाउची and the elementary charge केते ना e रे करा जाउची जोटा कि इलेक्ट्रॉन को हमें भी symbolize करूछे e रे okay so this is the definition आपण माने जानि परिबे SI unit केमिति चेंज करछि कूलम okay जोटा कि as a standard unit of charge भाबरे हम ताकू देखुछु so electric current is defined as the flow of what flow of neutrons protons electrons or atoms just ebe कहली को is the flow of what electric current is defined as the flow of what neutrons protons electrons or atoms this is what now electrons electric current is defined as the flow of electrons they are freely revolving around the orbit okay next what is electric current electric current is the flow of electric charge more specially it is defined as the rate at which charge flows so units ka hochi na coulomb ku and which is a defined as a 1 ampere for short gote short fine with the symbol of what A. Next देखो so electric current is equal to what na q by t next चलो the instrument used to measure electric current is called electric current को हमें जो instrument रे measure करि पारुछे ताकू कोन कहल जाउची voltmeter ammeter ohm meter और galvanometer कौन कहूचे ना इंस्ट्रूमेंट यूज करूचे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करिबा पई कौन हबो वोल्टमीटर एमीटर ओम मीटर और गैल्वेनोमीटर दिस इज व्हाट ना एमीटर so here is the picture of ammeter and से केमिति शो करे total description is that okay मैम हमर एपटे प्रबल गरम होउची आपण ब्लेजर पिंधि चंती गरम लागुनी कि बाबा रे एसी भी तो अछि ना सेति पई तो ब्लेजर पिंधिचु ना जहा ओ भाबिलो एते कथा थैंक यू फॉर दैट नेक्स्ट देखो the SI unit of electric potential difference is electric potential difference ର SI unit एबे जस्ट त मानु कहली राइट आंसर दियो एम्पियर जूल वोल्ट कूलम the SI unit of electric potential difference is what electric potential difference हमें कहा को कहूचे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिट रे हमें मापुचे दिस इज वोल्ट दिस इज व्हाट ना वोल्ट सो आज पई एति की क्लास रखिबा नेक्स्ट क्लास पुनी 125 रु स्टार्ट करिबा so definition of electric potential just have a look for a few seconds the electric potential at a given point is the electric potential energy that is EPE of a small test charge situated at that point divided by the charge itself okay
गाइज आज एति ही रखिबा अगेन देखा हबो वेडनेसडे पई टिके स्टे ट्यून फॉर वेडनेसडे हमर कोन ईवीएस देखा होची देन पुनी फ्राइडे ओके एवरी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपण माने ट्यून हे की रुहंतु फ्रॉम 11 to 12 ओके थैंक यू ज्ञानटेक थैंक यू सो मच so guys again कहूची मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 11 to 12 मोर रहुची 1 hour लाइव क्लास स्टे ट्यून फॉर द टाइम एंड जो माने भी परचेज करबा पे इंटरेस्टेड अछंती हमर प्लान म आपन को अगेन कहूची प्रगति बैच ओके for what for the pragati batch and for the pratham batch and for OPSC amara ASOpai achi praram batch तो जो माने भी इंटरेस्टेड अछंती से माने do enroll the batch by using my code this is SSP live so you can avail what the discounted price okay you can avail what with the discounted price आपण माने केते 1800 रे पाई जिवे अदरवाइज आपण को 2250 पड़िबो एंड टॉप एजुकेटर्स माने आपण को एकदम डाउट क्लियरिंग सेशन सहित मॉक टेस्ट एवरीथिंग आपण माने गाइडेड हेबे टॉप एजुकेटर्स मा ओके सो थैंक यू सो मच देखा हबो अगेन नेक्स्ट क्लास रे with some important EVS question and answer. Thank you so much. Bye bye. Have a good day. Take care. Heat wave अच्छी बाहर को बिल्कुल भी बाहर नहीं खाई पी की रूम रे बसी क्लास ओके थैंक यू वेरी मैम OSSC CGL जीके जीएस केमिति क्लियर करिवे मैथ ही जाउची मैथ रे स्ट्रांग अच्छो तो जीके जीएस हे जीवो बैच एनरोल करो पर्सनल गाइड पाई जीवो ठीक अछि बिल्कुल भी टेंस होने थैंक यू मिस्टर संदीप तो कथा तो मु बुझु जेबे र व्यस्त होना क्लास रे सी डिस्टर्ब करू छु र